Hello students, come to Biotechnology lecture number 6, right? See, what's the title? Different cloning vectors. Till now, we were knowing mainly two. मैंने एक बार सिर्फ आपको लिस्ट किया था, लेकिन दो हमने अभी तक अच्छे से थोड़ा सा पढ़ा है, that is viruses and plasmids, right? But when we are talking about variety of vectors, variety of vehicles used in transferring gene from one cell to other, these are the possibilities. ठीक है, अब देखो व्हीकल वेक्टर जैसे मैंने कंपेयर किया था, हमारे जो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स है, ठीक है, साइकिल है, देन कार है, टू व्हीलर है, बस है, राइट, एक्सयूवीज है, जैसे बड़ा है और कार का कंफर्ट है, ठीक है, शिप्स है, एरोप्लेन्स है, एयरबस है, चार्टर प्लेन्स है, ओके, हर एक की सुविधा अलग अलग है और अलग अलग पर्पस के लिए डिजाइन की है, अलग अलग पर्पस के लिए। तो आपका पर्पस कितना है, आपके पैसेंजर कितने हैं, आपको कब तक पहुंचना है, एज वैरायटी ऑफ व्हीकल्स आर अवेलेबल एंड एज पर रिक्वायरमेंट एंड नीड्स यू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर व्हीकल. Like that, in DNA recombinant technology, we have variety of options as per need. कितना बड़ा DNA ट्रांसफर करना है. सेकंड थिंग, कौन से ऑर्गेनिज्म में उसको पहुंचाना है. थर्ड वन, राइट, वो कौन से मार्कर जीन रखता है. ओके, नेक्स्ट वन, वो खुद को कॉइल करके, ओके, देखो डीएनए को, वेक्टर को टारगेट डीएनए से जोड़ दिया, अब उसने सेल के अंदर जाना है, तो खुद को कितना अच्छे से पैक करता है, कॉइल करता है, राइट, और वो खुद को दूसरे सेल में, ओके, पेनिट्रेट करने की क्षमता क्या रखता है. सो डिपेंडिंग ऑन वैरायटी ऑफ थिंग्स, type of target DNA, size of target DNA, donor cell, right, its penetration, its ability to coil, marker gene, variety of things are considered, and we have designed variety of vehicles. Some are natural vehicles, completely natural, which are found in nature, we use them. Okay, some are modified and some are completely artificial vehicles. Okay, so हमने अलग अलग प्रकार के व्हीकल डिजाइन किए हैं. आपको ये कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, राइट. सो फर्स्ट लेट अस गो फॉर enlisting the things. The vector vehicles are plasmid, viruses. Now you know virus is obligate parasite. Virus is obligate parasite. So this virus is bacteriophage, plant virus and animal virus. This is bacteriophage, plant virus and animal virus. These are natural vectors. They are naturally present. Okay, little modification we can do, okay, regarding viruses or regarding even plasmid. See, it is ultimately a DNA. It is ultimately a DNA. लेकिन अगर ये डीएनए के पास कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की इंफॉर्मेशन है, जैसे वायरस के पास डिजीज कॉज करने की इंफॉर्मेशन है, तो वो वायरस का डीएनए बाहर निकाल के उसका प्रॉब्लमेटिक जीन कट करके उसको हमको डिसआर्म करना पड़ेगा. सी, वायरस is a pathogen because it has a arm that is ability to cause a disease, right. It is having one very good ability that it can penetrate into a host cell and multiply over there. So we want these two abilities of virus. हमको ये दो प्रॉपर्टीज वायरस के यूज करने हैं. कौन से? होस्ट सेल के अंदर घुसना और वहां पे रेप्लिकेट करना, लेकिन होस्ट सेल को डिजीज कॉज करना नहीं है. In that situation, what we'll do? Take a virus, take out its genetic material, cut the part of a DNA, nucleic acid, whatever, right? Cut the part of the nucleic acid which is carrying information to cause a disease. So वो जो आर्म है, उसका वेपन है डिजीज कॉज करने का, वो निकाल दो, उसको डिसआर्म कर दो. ओके, और ये पैथोजन को हमारा पोस्टमैन बना दो, जो एक जगह से जीन लेगा और दूसरी जगह पहुंचाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ disarmed viruses can be used. Understood, right? So this is how viruses can be altered. If you want to insert a target DNA into bacteria,
Which virus you will use? Bacteriophage. If you want to insert target DNA into plant, use plant virus. If you want to insert target DNA into plant cells, then you need a virus, right? That is animal virus. समझ रहे हो, right? So this is how different type of viruses can be used. Okay, so plasmid and viruses. Natural one. Now these are bit altered one. मतलब इनका source natural है, लेकिन हमारे desired characteristic के लिए उसको हमने modify किया है. Okay, so look at the word cosmid. Okay, ये जो MID है इसका, it is representing plasmid, right? And this part cos is representing a cos site of viral DNA. Cos site of viral DNA. What is cos site? Cohesive site, which has ability to coil. Okay, see, as a vector vehicle, अगर बोला जाए, तो plasmid is very good, but it carries little amount of DNA. ये two-seater plane है, समझ लो. Viruses are like Airbus. They can carry abundant amount of gene, right? ये जो और मैंने liposome लिखा है ना, it is like a cargo ship, carries huge amount of DNA. बराबर? So इस तरह से हमने ये cosmid बनाई है. Cosmid is fusion of two vehicles. Okay, जैसे कार और बस का fusion है XQV, right? So like that, it is a fusion vehicle. What is that? प्लाज्मिड के बेनिफिट्स है प्लस वायरस के बेनिफिट्स है. मतलब वायरस जैसा वो ज्यादा जीन कैरी करेगा और प्लाज्मिड की पेनिट्रेशन एबिलिटी रखेगा. सो इट इज अ फ्यूजन व्हीकल. व्हाट इज फ्यूज्ड? प्लाज्मिड वेक्टर लिया, उसके अंदर वायरस का कोहेसिव साइट कट करके अटैच कर दिया. उसकी वजह से क्या हुआ? दिस cosmid कैन कॉइल प्रॉपरली and big size DNA compactly packed and penetration of big size DNA is made possible. Okay, so this is how cosmid, phasmid, BAC, bacterial artificial chromosome, YAC, yeast artificial chromosome, right? Liposome, it is a fat globule, fat molecules which are carrying many genes, many plasmids like that. Okay, protoplast fusion we have discussed in last chapter. It is also a method of producing recombinant. Gene gun biolistics. What is that? Target DNA is attached to an inert chemical. Target DNA is loaded on an inert chemical. It may be something like tungsten, and on that particle, very tiny particle, is bombarded on a cell. So that the particle along with the target DNA will penetrate the cell wall, plasma membrane and nucleus. It will penetrate cell wall, plasma membrane and nucleus. Right? And now the target DNA is in the nucleus. Okay? Okay? So this is what is a gene gun biolistics. Microinjection. Micropipettes are also there. Microinjection is target DNA is injected. Just imagine the size of the needle. You are penetrating target DNA in the cell, in the nucleus with the help of very tiny injection. Okay, so it may be micropipette or microinjection. So these are different types of vehicles vector we use in DNA recombinant technology. Okay, now see properties. इसके पहले हमने brief किया था what are the properties. क्या क्या properties है? Okay, vehicle vector के see properties of vector DNA. It should have origin, so that it can replicate. It should be autonomous. It is not under control of nucleus. Its replication is not under control of genomic DNA. क्यों? होस्ट सेल का खुद का डीएनए उसके काम करेगा. हमने जो प्लाज्मिड इंसर्ट किया है वो उसकी परमिशन लिए बगैर रेप्लिकेट होना चाहिए. समझ रहे हो ना? ओके, सो इट शुड हैव इट्स ओरिजिन, ओके, विदाउट परमिशन और इंडिपेंडेंटली. It should, without permission of host cell, independently, it should be able to replicate. So it should have origin. It should replicate along with the target DNA. Okay, then
cloning sites, restriction site. That too, one for one specific restriction endonuclease. आपके पास प्लाज्मिड वेक्टर है, आपने उसको EcoR1 से काटा. Your plasmid you cut by EcoR1 at GAA-TTC. But just imagine it has 3-2 locations, GAA-TTC. So that plasmid vector, which is having 3-4 palindromes, will be cut by EcoR1 and it's broken into fragments, and the fragments are lost in the cell or lost in the solution. How you can bring them together? Okay, ये कैसी बात हो गई? Vehicle vector, आपकी कार. देखो कार को देखो, अलग अलग ओपनिंग्स है. पैसेंजर बैठने के लिए दरवाजा खुलता है, सामान रखने के लिए डिक्की खुलती है, मशीन के रिपेयर के लिए सामने का बोनेट खुलता है. राइट? ओके, जस्ट इमेजिन यू आर अ टारगेट डीएनए. ओके, आप कार के पास खड़े हो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आया, उसने कार को हाथ लगाया और कार टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गई. ओके, तो क्या आप कार में बैठोगे? क्या कार आपको लेके जाएगी? नो. Restriction endonuclease will come, open the car at one location, you will seat belt, sticky ends के जोड़ दिया. Now you are safe in car, door closed and the car is carrying you. Okay, so it should have one restriction site, cloning site for one restriction endonuclease. Generally we prefer this. Selectable marker gene to highlight its presence in the recombinant cell while doing practically. Okay, जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आपको पता चलना चाहिए कि रिकॉम्बिनेंट सेल है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट सेल में मार्कर जीन का एक्सप्रेशन होगा. मार्कर जीन बताएगा हेलो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इन दिस सेल. Okay, so this is what is done by marker gene, and small sized so that it can incorporate. Okay, small sized by cloning itself. Then ability to get introduced in host cell, ability to carry large target DNA, okay, as per requirement. Understood? So these are the different properties of vectors. Now we'll go bit out of syllabus और हर vector के बारे में दो line जो no, we'll just go through little information about variety of vectors. Okay, this information which is right now on the board is in syllabus. Write down the things. Hello students, come to variety of vectors. See bacteriophage and उसके examples. हमको ये सब पॉइंट अब लिख लेने हैं. ये स्टेट बोर्ड में है, एनसीईआरटी में है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और एमसीक्यू बुक में है. समझ रहे हो? राइट? सो जस्ट गो थ्रू इट. Bacteriophage, it is a virus which causes disease to bacteria. It is bacterial pathogen. These are modified a lot, maybe by removing gene of pathogenicity, जिसको हमने बोला था disarmed pathogen, जिसका gene of pathogenicity निकाल दिया है, इसको disarm किया है. It is disarmed pathogen. Example, lambdaphage with DS linear DNA with cos site. कॉस साइट बोला था ना, जो कोहेसिव कॉइलिंग करने में मदद करती है. ओके, विथ कॉस साइट, कोहेसिव साइट फॉर पैकेजिंग ऑफ डीएनए, कैन कैरी टारगेट डीएनए अप टू 23 किलो बेस पेयर. किलो इज 1000, मतलब ये 23,000 बेस पेयर कैरी कर सकता है. अब ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है ये थोड़ी आउट ऑफ सिलेबस है. ओके, कहीं पे है कहीं पे नहीं है. प्रीवियस ईयर 12th के स्टेट बोर्ड में थी. Okay, so I have added it. Okay, so आपने ये लिख के लेनी है. It is about all the types of variety of vectors. Okay, please write down. Next one is cosmid. See,
cosmid is plasmid plus cos site of lambda phage virus. Okay, it is a modified vector. इसमें नेचुरल प्लाज्मिड है, नेचुरल लैम्बडा फाज के वायरस का सिर्फ कॉस साइट ऐड किया है, बिकॉज ऑफ विच द प्लाज्मिड्स एबिलिटी टू कैरी द जीन कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस. It can coil itself and larger sized DNA can be carried and can be introduced easily because after coiling the plasmid plus the target DNA plus the cos site is fully packed and has very tiny structure. Okay, so see, accordingly it is given, it can carry target DNA of 45 kb length, kilobase pair, kilobases. It has origin, selectable marker and restriction site. Now you know that all the carriers are having this. Written, next one, BAC, bacterial artificial chromosome. Write down long form. BAC, bacterial artificial chromosome. It is based on F plasmid of E. coli. You know there are R plasmid, that is antibiotic resistant plasmid. F plasmid is fertility plasmid, right? Then TI plasmid is tumor inducing plasmid. Plasmid are DS circular DNA extra chromosomal and they incorporate different additional properties which are not life essential. अगर प्लाज्मिड है तो कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी सेल के पास आएंगी, वो जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है. सो F plasmid is essential. F plasmid is essential for formation of pili. Okay, this F plasmid is essential for formation of pili. See, last year chapter cell में हमने देखा था pili and fimbriae. Pili and fimbriae. Pili are the outgrowths produced by the cell which help in conjugation, which is a primitive type of sexual reproduction. Fimbriae are the filamentous structure which are acting as hold fast. Right? ये hold fast जैसा काम करेगा. So जो बैक्टीरिया के पास F plasmid fertility plasmid होगा वो पिलाई बना सकता है, right? और पिलाई बनाने वाला प्लाज्मिड हम बैक्टीरियल सेल से निकालेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, पिलाई बनाने की क्षमता शायद निकाल देंगे और उसको टारगेट डीएनए जोड़ देंगे, राइट? सो सी, BAC, bacterial artificial chromosome based on F plasmid of E. coli, carrying target DNA up to 300 to 350 kilobases, also useful in genome sequencing project. Okay, so ये जो point है, we'll discuss it in human genome project. What is HGP, human genome project? What is that? When we started discussing variety of genes, अलग अलग genes को हमने देखना शुरू किया, हाइब्रिडाइजेशन शुरू किया, राइट, इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, एनिमल प्रोडक्शन शुरू कर दिया. ओके, तो जब बेसिक नीड्स हमारे सेटिस्फाई हो गए, अगेन वी गेट क्यूरियस दैट व्हाई वी आर हैविंग वैरायटी ऑफ डिजीजेस. सम आर मेटाबॉलिक डिजीज, some are pathogen borne disease and some are heritable disease. So when we come to know the diseases are heritable, then they can be predictable. So we studied pedigree analysis. देखो लिंक करते जाओ. When we came to know that we can analyze, we can predict and we can find out the pattern of genetic disorders, okay, which are found in particular family, we can help that family to take out that particular gene from their genome, from their family and help those family members to be healthy. तो उसके हिसाब से हमने जेनेटिक ऑर्डर को डिस्कस करना शुरू कर दिया, डिस्कवर करना शुरू किया. फिर हमने सोचा क्यों ना हम टोटल ह्यूमन जीनोम पढ़ ले. Why we are interested only in problematic gene? Let us study all the genes, good gene, bad gene, क्रोमोसोम नंबर 1 पे क्या है, क्रोमोसोम नंबर 2 पे क्या है. ओके, पूरा ह्यूमन जीनोम एनालाइज करना हमने सीखा. दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. ओके, जो हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लास्ट एरिया में रखा था, जो अब हम बायोटेक के बाद कंप्लीट करेंगे. राइट, सो दिस BAC इज यूजफुल इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन सिक्वेंसिंग ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन. मतलब कौन से क्रोमोसोम पे कौन से सीक्वेंस से जीन प्रेजेंट है,
ओके, ये ढूंढने के लिए, जीन मैपिंग के लिए भी ये काम करता है। ओके, नेक्स्ट वन, YAC, इट कैरीज टारगेट डीएनए मोर देन 1 मेगा बेस पेयर। ओके, अब ये यूनिट जो है वो हमको ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आउट ऑफ सिलेबस है। यूज्ड इन मैपिंग लार्ज जीनोम लाइक HGP। ह्यूमन जीनोम इज वेरी लार्ज, वी आर हैविंग 46 chromosomes, so it was really a big project, mega project, HGP. Okay, it contains telomeric sequence and centromere. It has origin, restriction site and marker genes. Okay, please write down the content. C, phasmid vector. कि अब नाम की तरफ केयरफुली देखेंगे तो ऑब्वियसली समझ में आएगा। इट इज बैक्टीरियोफाज प्लस प्लाज्मिड कैरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए। कॉस्मिड, फाज्मिड, इट इज लाइक दैट। कॉस्मिड में वायरस की सिर्फ कॉस साइट ऐड की है। ओके, फाज्मिड में बैक्टीरियोफाज भी है और प्लाज्मिड का कुछ एरिया कैरी किया गया है। ओके, नाउ कम टू ट्रांसपोन्सिस एज वेक्टर्स। ओके, राइट डाउन ट्रांसपोन्सिस jumping gene. Transponsis jumping gene. Transponsis jumping gene jump from one place to other place in one genome. Jump from one place to other place within a genome. There are two types of transponsis. One is cut pest and other is copy pest. One is cut pest and other is copy pest. Matlab, see, like this is one chromosome, other chromosome, like that there are number of chromosomes. This part of DNA is cut from here and get attached to other chromosome. That is cut pest. Okay, it get attached to other chromosome. Okay, cut pest में genome size में जितने DNA है उसका नंबर सेम रहेगा। Then what happened? You will say, हाँ मैम ये जीन यहाँ पे था, यहाँ से वहां गया, क्या फर्क पड़ता है? हाँ पड़ता है। See, if this is a gene, okay, यहाँ का जीन है, here lies A, here lies B. When A is transcribed, B is also transcribed, and because of A and B, the phenotype is regulated. If B is transferred somewhere else, okay, कट करके कहीं और गया, तो A के साथ B ट्रांसक्राइब नहीं होगा, और जहां पे गया शायद उसके साथ वो ट्रांसक्राइब हो जाए। ओके, सो ए का एक्सप्रेशन अगर बी पे अवलंबन है, ए जीन्स एक्सप्रेशन इज डिपेंडेंट ऑन बी, एंड ए एंड बी व्हेन प्रेजेंट साइड बाय साइड बोथ आर एक्सप्रेस्ड विथ ईच अदर, देन द एक्सप्रेशन इज डिफरेंट। इफ बी इज कट ऑफ एंड एडेड टू समवन, only A will be expressed and the phenotype is altered. Okay, so transponsis लास्ट ईयर स्टेट बोर्ड में थे, अभी तो है नहीं, लेकिन फिर भी बस लिख लो जंपिंग जीन। ट्रांसपोन्सिस आर टू टाइप, डीएनए कट करके कहीं और जाके गिरा अटैच हो गया। व्हाट इज कॉपी पेस्ट? डीएनए विल प्रोड्यूस अ आरएनए एंड आरएनए अगेन प्रोड्यूस अ डीएनए। देखिए, ये डीएनए आरएनए बनाएगा, आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से फिर से डीएनए बनाएगा, और वो डीएनए एडिशनली कहीं और जाके अटैच होगा, वो डीएनए एडिशनली कहीं और जाके अटैच होगा। सो दैट इज कॉपी पेस्ट, बिकॉज ऑफ विच जीनोम साइज गोज ऑन इंक्रीजिंग। Okay, so there are variety of such things. So DNA segment changing their location within the genome. Okay, so if you take out that part, attach your foreign DNA and get introduced somewhere else, okay, within a genome, or can be even used outside the genome, or can be used with gene gun, can be used with micropipette, micro injection. Okay, genome में छोड़ दो, वही को और जाके attach होगा. Okay, so transponses can carry foreign DNA with them. Okay, shuttle vector. ये बहुत ही modified concept है, बस definition देख लो, हमको ज़्यादा डिटेल जाना नहीं है. Okay, see, shuttle vector. These vectors can replicate in prokaryotes as well as eukaryotes. Right? ये दोनों के पास काम कर सकते हैं. Otherwise अभी तक हमने
प्रोकैरियोट के लिए प्लाज्मिड और यूकैरियोट के लिए YAC, okay, BAC यूज किए हैं, but it can be used anywhere. Example, YEP, yeast plus episome plasmid. You know episome? Episome is a type of plasmid which can integrate itself into the genomic DNA. Okay, so these are variety of vectors.